श्री गुंडीचा यात्रायां यदा रथोपरि भवन्ति तदा तेभ्यः यत् नैवेद्यं समर्प्यते तर्हि तत्र कथं महाप्रसाद इति उच्यते। कारणं भगवतः श्री जगन्नाथस्य यद् महात्म्यं वर्तते तेनैव महाप्रसादत्वं प्राप्नोति इति। अतः जगन्नाथस्य नैवेद्यं महापानृपति श्रेष्ठ नुक्तिस्तेषां न दुर्लभा। यज्ञ व्रत तप स्थितादिकरणेन यानि सुकृतानि लक्ष्यन्ते श्री जगन्नाथस्य महाप्रसाद सेवनेन अचिरादेव सर्वाणि तानि फलानि प्राप्यन्ते। अतः उच्यते यज्ञस्तपांसि राजेन्द्र व्रतानि विविधानि च तीर्थाटनानि तेनैव कृत्यानि सुकृतानि च। एवमेव वयं भगवतः महाप्रसादस्य विषये ज्ञातुं शक्नुमः। तत्र विविधेषु पुराणेषु अपि महाप्रसादस्य महात्म्यं वर्णितं वर्तते। अस्माकं परमं सौभाग्यं यद् वयम् अद्य विश्वप्रसिद्धायां रथयात्रायां तत्र चतुर्धा मूर्तेः विविधवैशिष्ट्यविषये श्रोतुं शक्नुमः, आलोचयितुं शक्नुमः, पर्यालोचयितुं शक्नुमः। बहु धन्यम् अस्माकं मनुष्यजन्म, धन्यः वयं। जयता जगन्नाथः, जयता जगन्नाथः। अग्रे श्रोष्यामः महाप्रभु जगन्नाथस्य नन्दिघोषरथः कथं चलति चलति। जयता जगन्नाथ। शुद्धं छन्दस्वरूपं मुनिजननमितं सर्वदेवे प्रणम्यं लक्ष्मीनाथं सुरेशं प्रशमितशमनं योगी सिद्धादिवन्द्यं शङ्खक्षेत्राधिराजं गिरिवरवसतिं केशवं गोपवेशं वन्दितं विश्वतातं दरदुरितहरं श्रीजगन्नाथ देवं। श्री जगन्नाथ देव समग्र संसार की भक्तों के विपत्तियों को नष्ट करने में सक्षम है। माँ भगवती भारती अभी अपनी जन्मभूमि की ओर अग्रसर होती हुई और कुछ ही क्षणों में वो पहुंच जाएंगी और लगता है बलभद्र जी महाराज पहुंच चुके हैं। महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी बहुत पीछे हैं क्योंकि वो लीला करके आने वाले हैं और लीला करने वाले स्वयं लीलामय जगन्नाथ अभी पीछे पड़े हैं। कहा गया प्रभु आपकी ये सुंदर लीला को देख करके समस्त जगत शांत जो पड़ा है अभी जागृत हो गया। कहा कि प्रभु आपकी लीला को हम दर्शन करेंगे और समग्र संसार की दुख क्लेश को आप जब चुरा लेंगे तब हम सुखी होंगे और शांति से बैठेंगे। कहा भगवान का नाम ही इसी संसार के लिए एक महा औषध है। इसीलिए कहा गया व्यामोहो प्रशमौषधम मुनि मनोवृत्ति प्रवृत्तौषधम दैत्यर्दार्तिकम औषधम त्रिजगतांग संजीवनैकौषधम भक्त्यात्यंदहितौषधम भवभय प्रध्वंसनैकौषधम श्रेय प्राप्तिक औषधम पीवः मनः श्री कृष्ण दिव्यौषधम। अर्थात औषध एक सम्मोह शमन की मुनि मनोवृत्ति प्रेरक है औषध यह, असुर भाव विनाशक औषध यह, तीन लोक की संजीवन औषध, भक्तों की अति हितकारी औषध, भव भयहारी अनुपम औषध, रेमन पीतारह दिव्य कृष्ण नाम श्रेयस्कर औषध। कृष्ण नाम रूपी ये औषध पान करने से संजीवन समान आपको एक अमृत मिल जाएगा। प्रभु आप स्वयं आ रहे हैं भक्तों के साथ लीला खेला करके और माँ भगवती भारती अग्रसर होती हुई। कहा गया महाप्रभु के साथ माँ भगवती भारती लीला करने में हुई अपने अपने समय में आती रहती हैं और इसी सुंदर स्वरूप को देख करके आप देख रहे हैं। रथ यात्रा लोकारण्य महाधूम धाम भक्तरा लोटाए पथे करिछे प्रणाम पथ भावे आमी देव रथ भावे आमी भक्ति भावे आमी देव हंसे अंतर्यामी। भगवान हंसेंगे नहीं तो और कौन हंसेगा। अभी कैसे चल रहा है ये रथ। ना जनुभव सिंधु मध्य रथ नावा जनुभव सिंधु मध्य रथ नावा प्रभु कृपा पत बार उठावा केशव बनिकै वर्त सुजाना
भवजल पार करना मन ठाना। भवजल से, भव संसार से पार करने का एक ही उन्होंने ठाना है, भक्तों को उद्धार करेंगे प्रभु। इसीलिए पहले बड़े ठाकुर चले गए, अभी माँ आ रही हैं, पीछे भगवान भक्त की दुख जंजाल को नष्ट करने आ रहे हैं। इसीलिए तो कहा गया जग जंजाल को कर या छिन्न भिन्न, नंदी घोष अग पापों को कर विदिन्न, बढ़ता जाता कर कर यही घोषणा, पूरा करूंगा जग जनों की सारी येषणा। भक्तों की सारी येषणाओं को, इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए माँ भगवती भी है और स्वयं भगवान भी है। इसीलिए कहा गया प्रभु ये दिव्य मनोहर रथ यात्रा का सुंदर दृश्य देखकर कवि लिखता है, मनमोहक दृश्य अति राजपथ पर, मनमोहक दृश्य अति राजपथ पर, मनमोहन है विराजित स्वरथ पर, मोह भक्तों के श्री जगतनाथ, महारास लीला करते हैं भक्तों के साथ। महाप्रभु आज भाई बहनों के साथ सारे भक्तों के साथ लीला रच रहे हैं। इसलिए कहा गया जय 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 जगन्नाथ, जय जय राधापति, नंद घोष रथ में सदा है जग के पति, भक्त है तुम रथ यात कर हर साल हरे, सुखानंद से भक्तों के हृदय देते भरे। सुखानंद से आप भर देते हो महाप्रभु, इसीलिए आप रथ यात्रा में निकल चुके हो। हे प्रभु आपकी इसी सुंदर रथ यात्रा में देख रहे हैं कैसा आप रथ प्रभु पाप विनाशक जय जग स्वामी, असरण शरण नमामि नमामि, लीलामय प्रभु दिव्य अनूपा, लीला वसधरि दारु स्वरूपा, भवजल बूढ़त जीव घनेरे, तिनकः चरण कमल तव नेरे, कृपा सिंधु तव चरण नमामि, दीन बंधु तुम अंतरयामी, जय जगन्नाथ मन भावन, जय दारिद्र दुख दोष नशावन। प्रभु पीछे आ रहे हैं और कहा गया प्रभु आप वामन रूप में चलते हैं, गमने वामनं चैव सर्वे कार्येषु माधव। गमन समय में भगवान का वामन स्वरूप का दर्शन और मनन करना चाहिए, इसीलिए तो उनकी भी स्तुति की गई है। नमो वामन रूपाय, नमो वामन कर्मणे, नमो वामन नेत्राय, नमो वामन वाहिके, नमो वामन रूपाय बलिध्वंस विनोद के, त्रिविक्रमाय ते नितम तस्मै श्री नमो नमः। और इतना ही नहीं, भगवान की इस रथ यात्रा के समय आप देख रहे हैं हमारे उड़िया साहित्य में, काव्य साहित्य में, विशेष करके संत साहित्य में, भक्त साहित्य में भगवान के प्रति एक सुंदर कथा जो उनके काव्य में मिलते हैं। और कहने का मतलब ये है कि भगवान के प्रति भक्त के उद्गार, हृदय के उद्गार प्रकट होते हैं। उड़ीसा के पद सम्राट कहते हैं प्रभु मान धारण कीजिए, अहंकार मेरा हर लीजिए, मेरे कीर्ति सभी हर लीजिए। और वनमाली प्रभु कहते हैं मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुट्ठी भर भक्ति रेत चाहिए प्रभु, प्रभु प्रेम चाहिए प्रभु। हे जगतनाथ में कुछ नहीं मांगता, न धन मांगता हूँ न जन मांगता हूँ, बस मुट्ठी भर भक्ति रेत मांगता हूँ। भगवान परम भक्तवत्सल है, इसीलिए भगवान की ये सुंदर स्वरूप आप देख रहे हैं रथ यात्रा पे। और भगवान से प्रार्थना करते सालवेग भी कहते हैं श्री चरणों में, हे प्रभु हे गोसाई हे जगत के बंधु, मेरे श्री चरण बिनु नहीं और नहीं, साक्षी उदास में मेरे आने तक नंद घोष बड़े न आगे चाहता हूँ गोसाई। इसीलिए कहा गया प्रभु आपके चरण में आपके कटाक्ष पात से ही हमें मुक्ति मिलेगी। इसलिए कवि सूर्य बलदेव कहते हैं भगवान भी मुझ पर कृपा कटाक्ष डारे, कमला रमण हे नारायण शरण आया हूँ तेरे, तुम होते हुए नाथ महाबाहु और किसे भजूंगा प्यारे, तुमने ही हरि उद्धार ही करी, उद्धारा ही करी, नक्र काट चक्र सहारे, किसी के विपद तुम्हारा हरा नहीं जग सारे। इसीलिए कवि जगन्नाथ कहते हैं नमस्ते प्रभु जगन्नाथ, अनाथों के है नाथ, ब्रह्मा विष्णु रुद्र भी, तेरे बिना अन्य गति नहीं। इसलिए प्रभु तेरे बिना तो और अन्य गति नहीं है। एक क्षीरमय सिंधु कन्या प्राण बंधु, तुम तो जग के पति, समदृष्टिवाना फहरा कर कैसी ये पक्षपात रीति है प्रभु, ये पक्षपात रीति कैसी आपकी प्रभु। किसने क्या दिया, किसने क्या नहीं दिया, किसने क्या किया मैंने क्या नहीं किया, किसने क्या दिया और मैंने क्या नहीं दिया, इसी कारण मेरी यही गति है महाप्रभु। इसी
इसीलिए प्रभु आज आपको तो मैं मन भर गालियां दूंगा, तुमको जगन्नाथ आज मेरा मनोरथ भर भर दूंगा गालियां है कृपा निधि जगत तक आप, क्योंकि आपने झूठ कहा है। क्यों झूठ कहा है? ना आप दाता बता रहे हैं खुद को, आपने ले लिया और दे दिया। हे जगत करता नाथ झूठे हरि कहला रहे हो, अंतर में कपट संजोए क्षिति में दाता बुला रहे हो। दिया जो लिया वो क्या जानते नहीं चतुर्भुज, इसी हेत हे भार्गवी नाथ कहरा रहे हो बड़ा ध्वज। प्रभु युवा वैसे मैंने तो पुकारा आपको, लेकिन आपने सुना नहीं। युवा वैसे पुकार रहा हूँ, अगर चाहे होते सब दूर दुख हर चुके होते, मगर जानता था मैं तुम हो बड़े डकायत। भगवान को डकायत कह डाला। आहा प्रभु देख रहे, भवा परम गुणाकरम निरस्त दैत्य कुंजरम भुजंगवार सुंदरम भगे मंदरम रथोत्सवे ग्रगामिनम गुणानुरूप नामिनम वरी सुपेय कामिनम नमामि सर्वयामिनम। और दूसरी तरफ भगवान से कहते हैं कि प्रभु और कुछ नहीं, आपके शरण में मैं जाता हूँ, जो कुछ आप चाहते हैं वही करिए, अच्छा हो या कि बुरा करने को तो मेरा बस की बात नहीं। मेरे हे महाप्रभु सभी तो तेरी इच्छा, रखो या न रखो मेरी तो गति तेरी ही पति तपावन है बाना है प्रभु। हे प्रभु आप इस संसार के समस्त गगन पवन को मधुर बनाइए। मधुबाता ऋतायते मधुक्षरंद सिन्नवः मधुन्नो संतोषधि मधुनक्तमुतो ससो मधुमत् पार्थिवम रज मधुद्यौरस्तु न पिता मधुमन्नो वनस्पति मधुमान अस्तु सूर्य मध्विर्गावो भवन्तु नः मधु मधु मधु। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। Jai Jagannath, glories to Lord Jagannath. Today is the festival here at Puri, and in the same way the festival is replicated in different parts. Of course, outside India, many of the festivals are not observed, not celebrated on this particular day because of the restrictions of the individual cities and the governments in different countries. For example, in September, in the month of September, on the 11th of September, London will be having the Rath Yatra. Of course, it is arranged to courtesy the International Society of Krishna Consciousness, and there is a new temple that is also coming up in London. And the city authorities, it all depends when they give the permission, and mostly they give the permission on the Sundays when everything is closed, and at least there would be the less traffic on the road, so that the movement of the chariots can be done very easily and comfortably. In London, what happens, the Rath Yatra, the entire route of Rath Yatra begins from Hyde Park to Trafalgar Square. It's a long way, and on the left side of the road it is all emptied for the movement of the chariots. And on the right side, the one-way traffic is there, but still then the singing, dancing and everything is going on there. And in the same way, the first Rath Yatra overseas happened in the year 1966 through the initiative of Prabhupada Goswami, who is the founder of International Society of Krishna Consciousness, Los Angeles. And that is there, and they have 3 chariots also in the same way, in the minuscule way that we find here. And this is the sea of people. If one looks very minutely at the television screen, one can understand as if it is a floating chariot on the sea of people, because the wheels are not to be seen. Only the servitors and the gong beaters on the floor of the chariot are seen. And the chariot looks little smaller. That is the way. The crowd has trounced all around the chariot, and people, they have taken up all the vantage spots and perched themselves on every nook and corner and the terrace and in the balconies and everywhere, even on the walls also we can see. So that is the way everyone wants to have a glimpse of those 2 large heights, and humidity is definitely there to some extent, and that is why it is the Department of Fire which is arranging the sprinklers there. The sprinklers are sprinkling waters
just to cool the atmosphere, but the spirit is not to be dampened and the excitement is running in the air, and that is the spirit of the devotees of the Jagannath consciousness here, and the devotion. And the devotion, it knows no bounds here. And it becomes sometimes a stupendous task, a very difficult task, for the people to man the chariot to make it move safely and smoothly. Of course, there is the cordon, is the air cordon set by the security personnel, because nobody comes very near the chariot when it is on the move. Because if people that come near the chariot, who knows, there may be an accident. And to ward off any accident, of course there will be no accident, because we haven't come across any such accident in last many, many years. There will be no accident because it's all the blessings of Lord, and everybody is putting their services to find the blessings of Lord. And this is the chariot of Goddess Subhadra. And the restrictions, nobody has gone by the restrictions, even though the restrictions was fixed to 62. 62 people would be atop the floor of the chariot, but still then I can see it's more than double. 12 gong beaters and 50 numbers of the servitors and temple staff. But it is much more than that. And why this happens? Why this eager jostle? This happens because everybody wants to stay close to the gods and goddesses, and everybody wants to have a direct contact with everything. The contact, and through contact, they connect themselves with the divinity. And this is the chariot of Nandi Ghosha belonging to Lord Jagannatha. It's coming, inching forward to the garden house. And the chariot of Lord Balabhadra is already parked at the designated spot. And Lord would be staying on the chariot for the night, and tomorrow they would be getting inside the temple. And there is a gate. There are two front gates to the garden house or to the Gundicha temple. And the left gate to the front is the gate for the entry. And when, after the 9 days of staying there, when the Lords would take up the return car journey, they would be getting out of the other gate, that is called the Nakachana Dwara. It's on the other side, and there are two canopies, and on the entry side canopies there is the mural of fresco of the Dasavatara, because here, very close by, there used to be the Dasavatara Matha, where poet Jadev wrote his Gita Govinda. And there what happens? There when he wrote about the Dasavatara, he spoke about Buddha, Lord Buddha as Avatar, as an avatar. So that is the way it happened, because everybody believes that much before this place came to be known as, famous for its Rath Yatra, it used to be known as Dantapura, and it used to be the seat of the Buddhist devotion. Well, that is another story, and some people, some wise people, they refute that claim also. Whatever that is, the festival is there, and festival is there for hundreds and thousands of years. And it will continue. It will continue much, much ahead, as long as the humanity exists, as long as love exists, as long as the devotion exists. And this is how slowly and steadily the chariot of Goddess Subhadra is moving. And there is the navigator who is waving that red flag. And people, those who are entrusted with the responsibility of maneuvering the movement of the chariot, particularly the service personnel and the police personnel, they keep a watch on the movement of the flag, because that signifies when to stop and when to commence. That is the way. In fact, he is the cheerleader. He is the navigator. And they are the servitors. Of course, they don't have any other service to offer all through the year, only during the festivals, only during the movement of the chariots.
in the outward journey and also in the inward journey. They have to offer their services. And they belong to the holy town of. So this is how the Jatra continues, and it is now very, very close to the entry gate of the garden house or the Gundicha temple. And Gundicha temple, it is closed all through the year except for these days. And a day before the Rath Yatra, it is opened and it is cleaned. And some 500 years back, with the consent and with the permission of the Gajapati king, Chaitanya Mahaprabhu was given this permission to cleanse the premises of garden house. And so that is the way the devotees of Vaishnavite order that was propagated by Mahaprabhu Chaitanya, they began with that. They began with that. And they come, the devotees, and the devotees of Vaishnava order, Gaudiya Vaishnava, rather I should say, there are two types of Vaishnavas, the Gaudiya Vaishnava and the Utkaliya Vaishnavas. And the Gaudiya Vaishnavas attendants, they come in large numbers from different parts of the world. It's hard to believe. They come from different parts of the world. Of course, the Hindu-born people of Indian origin, they come here and they carry a new broom of the coconut lipsticks. So that is the way they clean. They clean the entire premises of garden house or the Gundicha body, that is what they call. And then it gets whitewashed and kept ready to welcome the lords. That is the way it happens. And after sweeping the entire premises of the garden house, I call it the garden house, and many people, they call it to be garden house because it has a number of trees, coconut trees, the naraka nut trees, and also the jackfruit trees are there. And they are planted in a beautiful way, as if the Lord will go to his garden house for holidays. But the Vaishnavites, they believe that the Lord comes to Vrindavan to spend the times with the gopis and with the friends. So people, they always believe that in a different way. It is a journey from Gokul to Mathura and Vrindavan. So that is the way they believe. And Lord Jagannatha is constructed and it is also construed and understood as the most modern of all moderns. Social harmony is there. No religion in any part of the world, anywhere, it speaks about this social harmony, irrespective of the differences of in any way. All are together while pulling up the chariots, brushing shoulders with each other. Nobody asks anybody about the class and all these. Though the festival was put off elsewhere in the state, here we had the festivals even during the pandemic period. Anyway, it's a grand celebration that is going on, and it's a celebration of